कैमरा में सर्वे करें। यस यस ठीक है सर पीछे कैमरा बीच में आ रहा है। ओके सर मैम थैंक यू। या रोल सर सर लुक दिस साइड कैमरा में सेकंड वाला समोर ये वाला इकडे समोर वाला look at photo huh स्माइल लेफ्ट साइड next yeah next और look here yes in next front yeah look here thank you okay समोर look here center here प्रशांत यादव नंदिता thank you कमल तो यहाँ जाएंगे ना दीप के पास दीप बस नहीं चलेगा ओके ठीक है चलेगा सर एसजे तैयारी प्रिया नादा yeah you know wait सर ये वाला वीडियो वाला समोर वाला सिमरन सेगल महाजन look here sir मुकुंद केकर जाकिर हुसैन thank you सदम सामत look here This beautiful show. Tell us something about your artworks and the inspiration behind it. Okay, so both of my artworks are inspired by the quiet moments that we often overlook in everyday life, you know, in the rush and hustle of everyday life. My first artwork over here, you know, it captures a moment which is often overlooked in everyday life. So it displays a woman who's sitting beneath under the shade of a tree, and she's just immersed in the quiet task of making a rangoli. And I feel like you know, the stillness of the painting really allows the viewers to capture the beauty and notice the beauty, you know, in routine, tradition and repetition. And the painting, I feel like, really captures, you know, the quiet moment which, you know, we often overlook in everyday life, and just your simplicity and, you know, how look here beauty and peace is often you know, not present in the grand moments of life, but, you know, in the simple quiet acts which are done with care and intention. And it's called In the Quiet of Doing. It represents presence and stillness in action. And my second artwork captures, you know, the presence and stillness in connection, right? So two figures sit close, and one rests her head on the other shoulder. And you know, it's a simple act, but it truly, you know, shows deep tenderness. Yeah. It truly shows deep tenderness, and I feel like you know, the artwork captures how the comfort not in conversation but in presence. And I feel like we have so many of these moments in daily life which, you know, comfort is often overlooked when it's in the form of presence, but it's such a pivotal and necessary aspect. And I feel like, you know, it really shows that the importance in, you know, like it shows how, like, the importance in
the painting truly speaks of trust and how the quiet moments where we should allow ourselves to lean and be held even for a brief moment, and I feel like it really speaks about the vulnerability that the strength in vulnerability. Yeah. Thank you. At such a young age, you've taken up the task to co-curate this show. Yes. So what was the process like? How did this inspiration come, and how was it working with the man himself? Yeah, so I think good. So I think it was a little hectic, with everything going on. I had to balance school as well. But I feel like with Rane sir, he made the process really seamless and he made it really easy for me. Yeah. And how would you like to urge the people of your age to kind of take a part, because a part of the proceeds are going for such a noble cause? Yes. What would you like to say about that? Okay, so I feel like co-curating this exhibition truly showed me that art has this tangible impact, right? And it really moves people and it can connect with people. And I wanted to turn that impact into something tangible, and I feel like the proceeds going to such a noble cause truly, allows me to, and allows all of these artists, to really make an impact with their art. And all of the proceeds will be going to the Active Citizen Forum, which Alert Citizen Forum, which will be all of these proceeds will be going to support the education and developmental resources for tribal children, and tribal communities face one of the biggest gaps in society in terms of access. And I feel like the exhibition contributing to such a cause is truly necessary, and I'm so glad that we can make such an impact. Thank you and congratulations. Thank you. Sir. ये शो करते वक्त मुझे फर्स्ट मेरे नज़र में आया कि आलिया इज़ अ बेस्ट फॉर इज आर्ट, क्योंकि उसका इतना अमेजिंग आर्ट है, मतलब इतने कम एज में उसका जो पोर्ट्रेट्स या उसका जो फिगर ड्राइंग्स है उसको करने का जो तरीका है, जैसे जो कॉलेज के बच्चे भी करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं वो बहुत इजीली कर लेती हैं। मतलब अगर आप उसका काम देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो 16 साल की बच्ची है और उसने इतना अमेजिंग काम किया है। इस एज में, जिस एज में हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आर्ट सीखने का, उस एज में वो बहुत ही उस लेवल का काम करती कि आर्टिस्ट के कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 5 साल लगते हैं। और उसने जो हिम्मत दिखाई कि नहीं मुझे भी ये शो में पार्टिसिपेट करना है, प्लस मुझे सपोर्ट करना है कि जो बच्चे जो ट्राइबल्स से आते हैं उनके एजुकेशन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं तो ये सही टाइम है जो सहयोग का, कि जो उसके माध्यम से हम लोग जो उसे करना है जो अलर्ट सिटीज़न फोरम के लिए या जो भी संस्था के लिए हम जो हर साल करते हैं उस तरह से, तो फिर इसके सहयोग से ही आलिया के सहयोग में अलर्ट सिटीज़न फोरम को हम लोग सहयोग करवाएंगे। और सर ये 9वां संस्करण है सहयोग का, इस बार क्या अलग है? ये 9वां एडिशन है, तो ये साल हम लोग ने हर साल एग्जीबिशन में पेंटिंग्स होती है, स्कल्पचर्स होते हैं। ये साल मिक्स मीडिया है, कोलाज वर्क है, प्लस फोटोग्राफी भी हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये साल हमें फ़ोटोग्राफी भी देखने मिलेगी, जिसमें हमारे साथ जो चीफ फोटोग्राफर है, जो बेटर फोटोग्राफी आर्ट मैगज़ीन के जो चीफ फोटोग्राफर और सीनियर फोटोग्राफर है शिरीष कराड़े सर है। फिर बाद में सब लेफ्टिनेंट पार्थ महाजन है जो नेवी के सब लेफ्टिनेंट है, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे शो में इतने बड़े बड़े जो कलाकार हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करके हमारा जो लेवल है वो बढ़ाया है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि जिन्होंने हमारे साथ जो जुड़ गए उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। एंड सर कितना ज़रूरी है, चाहे कोई युवा हो या चाहे कोई वरिष्ठ आर्टिस्ट हो, कितना ज़रूरी है एक सही मेंटर होना आपके हिसाब से? जैसे कि आपने बताया कि आलिया जो आज कर पा रही हो वो करने में आपको 5 साल या 7 साल लगते हैं। जी बिल्कुल। तो मेंटरशिप का कितना बड़ा भूमिका रहती है? सबसे ज़रूरी होता है कि लगन, वो अगर आप में नहीं हो तो फिर आप कितना भी मेहनत लो उस पर आप कर नहीं सकते हो। तो सबसे बेस्ट है कि लगन और टाइम, जो लगन से और टाइम दे के काम करेगा वही इस लेवल तक पहुंचता है।
तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटर के लिए कि वैसा स्टूडेंट मिले कि जो बहुत लगन लेके उसको प्रैक्टिस करके ज़्यादा टाइम देके वो करे. Thank you so much, sir. Thank you. Say I'm a big fan of Kamal Ahmed ji. I absolutely love his work. I think he has Saraswati at his fingertips. I'm strictly an amateur painter. I've been involved with Sayog from the very first show that Satyendra Rane put up. So I've been involved with it for a long time. I do acrylics on canvas, and every year it changes. Right now in the meditative process, the Linga Bhairavi, I do a lot of Linga Bhairavi Kriya, so that inspired this. The other one is inspired by Ardhanadishwara. And inspiration can come from anywhere. There were some time back, I did a series of paintings, acrylics on canvas, inspired by the rich jewel tones of my Kanjivaram silk sarees. So it just varies from, and I think what I love about Sayog is how inclusive it is. There's always, he is all about access. He wants to promote and give opportunities for newer artists, younger artists, and give a platform for them so that, and I think it's not just about what happens in the show. After the show, over the next few months, people have been discovered, galleries have come in, buyers have come in, and so much has sold, and people's careers have taken off thanks to his initiative. And I'm very happy to be a part of this in some way. Ma'am, since you're describing yourself as an amateur artist, how important is it for, according to you, for the youth of today to kind of take up art, be it in any form? I think it's extremely, extremely important, you know. Culture. I think humanity lasts, our culture lasts simply because the arts, the storytelling, all of that lasts. Okay, whether it's dance, whether it's painting, whether it's music, I think that is something that needs to be handed over generation to generation. Of course, art evolves. Art evolves. Today, the context for the art could be very different. But I think art is extremely important in life because without art, without music, without aesthetics, where is the juice in life? It gets very dry. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. I have the both of you over here. सर आप अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए. अच्छा, अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए. नमस्कार, मैं कमल अहमद हूँ कर्नाटक से, और मेरा सौभाग्य है कि सत्येंद्र राणे सर से मेरा एक स्नेह बढ़ा, और वो भी सहयोग के द्वारा, ये मेरा सौभाग्य है. और इस बार भी मैं ये शो में मेरा 2 पेंटिंग लगाए हूँ. मैं ज़्यादातर 30 साल से काम कर रहा हूँ. मेरा जो फॉर्मेट रहता है खुद का एक फॉर्मेट बना लिया है मैंने, और सब्जेक्ट भी मेरा इंडियन माइथोलॉजी रहता है, हिंदू माइथोलॉजी से राम पट्टाभिषेक, श्री कृष्ण, हनुमान, इसी तरह के मेरा सब्जेक्ट रहता है. और वही सब्जेक्ट लगा के 2 पेंटिंग मैंने दिया, और इस एग्जीबिशन में भी 2 पेंटिंग मेरा लगा लिया है. और सबका नज़रिया भी वो पेंटिंग पर बड़ा है, और सब लोगों को भी सराहना किया है. ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. धन्यवाद सर. सर आप अपनी पेंटिंग के बारे में मीडियम क्या यूज़ किया आपने? मीडियम में तो ज़्यादातर एक्रेलिक बनाता हूँ मैं, ज़्यादातर एक्रेलिक और कैनवास के ऊपर. उससे पहले मैं थोड़ा छोटा बनाता था, मिनिएचर पेंटिंग बनाता था 10-12 इसके साइज़ में. लेकिन अभी जो बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा अच्छा लगता है, और इससे फ्रीलांस पे रहता है अच्छा, और उसका एक फोकस भी अच्छा है ये इंडियन मैथोलॉजी से. इंस्पिरेशन क्या थी? मेरा इंस्पिरेशन, मैं तो बहुत सारा बसूली शैली मैंने पेंटिंग देखा था. बसूली जो आपको मालूम होगा शायद, वो बसूली शैली से मैं इंस्पायर होके अपना कर्नाटक का जो विजयनगर स्टाइल है एक, वो विजयनगर स्टाइल मेरा वो देख के वो स्टाइल मैंने अपनापन में लेके एक खुद का स्टाइल बना लिया है. Thank you so much, sir. Yes, thanks sir. They co-curated a beautiful show. What would you like to say about the same? So I think we're very honored that we got a chance to, we're able to do this on her birthday, and she spent a lot of time, making these art pieces, and I think her motivation has been through her school and her exams has been the fact that the proceeds would go to an organization that works with tribal children. So I think that was a motivation for her, and I think she's done a good job, and I'm very proud of her.
And sir, at such a young age, she has decided to co-curate this show, and a part of the proceeds are going towards such a noble cause. What would you like to say about her thought process? And I think she has been passionate about art since childhood, and she also likes to help in her own way to the needy, and this was her way of doing both the things at the same time. do you remember her first introduction with the art? Yeah, she was very small. I think 6 years. Okay. That time, since then she's doing. It's a pleasure to have the both of you. Thank you. Thank you. Thank you so much. मांजरेकर मी फाईन आर्ट केलेलं आहे एल एस राजा स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई बँड्रामध्ये. माझ्या पेंटिंग्स ह्या बेसिकली फिगरेटिव्ह आणि रिअलिस्टिक टच माझ्या पेंटिंग्समध्ये तुम्हाला दिसेल. मी ऑइल ॲक्रेलिक दोन्ही मीडियममध्ये काम करतो. 2006 पासून मी ह्या फील्डमध्ये कंटिन्यू काम करतो आहे आफ्टर कॉलेज. तुम्हाला दिसेल माझं म्हणजे रिअलिस्टिक आणि थोडा ॲबस्ट्रॅक्टकडे पण असं माझं थोडंसं कल आहे, पण आता मला एक्सप्लोअर करायचं आहे अजून माझ्या पेंटिंग्समधून. तर ते आता पुढे जर्नीमध्ये कळेल, आपल्याला नवीन काहीतरी बघायला नक्कीच मिळेल. थँक्यू. हां, ॲक्च्युली सत्येंद्र सरांमुळे आम्हाला इथे येण्याचा योग आला. याआधी आम्ही एका ठिकाणी भेटलेलो, तर सरांनीच आम्हाला अप्रोच केला की आपण एकत्र इथे एक्झिबिशन करू शकता म्हणून, आणि त्यांचाच मी खूप आभारी आहे का त्यांच्यामुळे मला ह्या शोमध्ये पार्टिसिपेट होण्याचा मान मिळाला. धन्यवाद. थैंक यू. हाय, मेरा नाम एस जे तायडे, मैं पूना से हूँ और आप देख रहे हैं ये मेरी जो पेंटिंग है, मैं एक फिगरेटिव कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ. मैं मोस्टली फिगरेटिव फेमिनिज्म पे काम करता हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं जो आज के दौर में डिजिटली युग है उसमें हम किस तरीके से उन्हें देखते हैं, इसे लेकर ये मेरा सब्जेक्ट है. और सत्येंद्र जी के साथ हमारा योग है, उन्होंने हमें अप्रोच किया तो मुझे लगा मैंने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आज इन सभी के साथ मैं यहाँ पे शामिल हुआ. सत्येंद्र सर के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा सर आपका? एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ही मैं उनके साथ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. काफ़ी अच्छे आर्टिस्टों के साथ मुझे ही मेरा आर्टवर्क लगाने का मौका मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. थँक्यू सो मच. हां, नमस्कार, माझं नाव प्रशांत जाधव. या सहयोगमध्ये मी 4-1 वर्ष भाग घेत आहे आणि खूप छान वाटतं. आणि माझ्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर मी सध्या कोलाज वर्क करतो 2-3 वर्ष, आणि सहयोगमध्ये मला चांगला प्रतिसादही मिळतो आहे. तर आणि काम छान होतं. आधी मी पेंटिंगमध्ये बरंच वर्क केलेलं आहे, पण काहीतरी सहयोगसाठी आणि काहीतरी नवीन देण्यासाठी मी प्रयत्न नेहमीच असतो माझा, आणि त्यामुळे 2-3 वर्ष मी कोलाज वर्क, पेपर कोलाज वर्क करतो, आणि मला आवड आहे त्याची आणि पेशन्स असतात त्यामध्ये खूप, पण छान वाटतं करायला. आणि सत्येंद्र राणे ज्यांचा हा शो आहे त्यांचे मी खूप आभार मानतो, त्यांच्या टीमचं खूप आभारी आहे. And I've been part of the Sahyog team for the last 5 years, and I'm very grateful to Satyendra Rane for providing this platform to us artists, where today it's very difficult to our art to reach out to the right kind of audience. So through amazing galleries which we have got opportunities to exhibit our art, I'm very grateful to that. And also we always support a cause with every show. Either it is Alert Citizen Forum or it is any very meaningful NGOs where we see the effectiveness of the the help that we can provide, and we feel fortunate that we are able to help these NGOs also. So this year has been also very good collection. We have photography also, which has been included for the first time, and the collection I feel this year has been as good as always. I'm very grateful to Rani sir for having the show at a very lovely gallery this year, and also to Nandini and team for always covering our show very well. And I would say I have 3 of my works on display here. It would be really nice if you could come and have a look at it along with the other artists whose works are absolutely inspiring. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Nasik, and the painting that inspired me is from nature, that subject which I have taken. The title itself tells you it's a misty morning,
and search of light and sky moving. These are some of the subjects which I've chosen and which has inspired me. And the medium which I've worked is acrylic on canvas. Thank you. I am Mrs. Shailaja Kamath. I am from Bombay, and my subject of painting is cityscape, which I like very much. And the main inspiration behind this for me is when I go out in villages, my native place, and some of the villages or some of the cities where the slum area or some difference in the society, you can see different type of houses, and I am more attracted towards that. And then I feel like putting them with my brush, with acrylic colors on canvas, and I like it very much. And one thing I would like to mention very, very important is my mentor here behind all this struggle for me, which I've done for about 4-5 years. Mr. Satyendra Rane, he is my mentor, and he used to point out my mistakes every now and then, and so that I improved myself, and I am today standing here. Thank you very much. It's a pleasure to have you. एवरीवन, मैं रंजन पटेल मुंबई से हूँ। मेरा पेंटिंग का नाम है बुद्धा, पीस ऑफ बुद्धा, और पिंक पेटल्स ऑफ द्वारकाधीश का मंदिर है। तो दोनों, जब बुद्धा पेंटिंग भी बना रही थी तभी बहुत मुझे भी शांति मिली, पीस ऑफ ऐसा माइंड में एकदम शांति मिलती है। तो बुद्धा पेंटिंग के समय मुझे ऐसा लगा। और ये कृष्ण का मंदिर है, तो कृष्णा मेरा हीरो है। मुझे वो कृष्णा की जो है सब गीता का सार है, वो उसके इंस्पायर होके मैंने ये उसका द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया है। और मेरा ऑयल पेंटिंग है। तो ओके, thank you. Tawle, I am from Mumbai. I work in acrylics on canvas. My main forte is working with metallic objects. I do sculptures. I give the meaning to the objects which are shiny objects, and they are they bring the harmony. They carry the vibes, and they are they give me peace of mind. Because whenever I am working with any objects, I just don't look at them very abstract. It's not an abstract form. It's something it gives you vibes, it gives you energy. So I just want to represent those things in my paintings. And this show is Sahyog's 9th edition. My mentor Satyendra Rane, he's my mentor. He has been teaching me for last 3-4 years. And Alia Thakkar is the co-curator of the show. I'm very thankful to both of them. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure to have you. Hazari. I'm a grade 12 student in Hillspring International School, and my painting is titled The Matriarch. It explores the theme of motherhood and just mother's care, and I've explored it through the medium of acrylic on canvas. So my painting shows an elephant along with its calf, and I was inspired by the elephants that I saw in Masai Mara on my trip when I went, and I wanted to do something for my mom, like an ode to her, because she's one of my closest, most dearest people in my life. So it was for her, it was an ode to her. And so I'm really thankful to Satyendra sir as well as Alia for putting up this amazing exhibition, and everyone should surely come and visit and look at all the amazing artworks all these artists have created. Thank you so much. Thank you. Should I? Dr. Vibha Sharma here. So one part of me is being a dentist and working for a pharma company, but the other part of me is being creative. So I have participated in the exhibition. My topics are Birds of Paradise and the Jungle Story. So I basically love birds, but looking at current scenario, the pollution and everything has made them extinct. So I felt that somewhere they should be mentioned so that people get aware about the beautiful birds which are already there and getting extinct. So we should always remember they have their own space and we should take care of them. Next in my painting I have put across some cats
which are also beautiful. It's just that when they lose their charm, people just make them go away. So I really want people to take care, even if they are not looking very cute or anywhere else. I am very thankful to Satyendra sir to give me an opportunity, and also Alia to co-curate this event. Thank you very much. Thank you so much.